श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अद द्वितीयोऽध्यायः 13వ श्लोकम् का वा आत्मवृद्धिरदनादविरङ्गवाति विष्णो कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णो उद्विग्नमीनयुकलं द्विजभङ्गिशोचिके आषण्णभृङ्गनिकरं सायिन्मुखं ते यौषोद्वयाकरसरोजहतपतङ्गो दिक्षो भ्रमन् भ्रमत ये जयते अक्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वग्रजटावरूतं कष्टो निलोहरति लम्पडयेष नीवीं रूपं तबोधन तबच्चरदां तबूक्नं के दत्तु केन तपसा भवतो बलब्धं चर्तुं दबूर्गसि मया सकमित्रमह्यं किं वा प्रशीतति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं त्यजदेव दत्तं यस्मिन् मनोदृकभिनो न वियाति लग्नं मां चारु शृङ्गर्हसि नेदुमनुवृतं ते चित्तं यदप्रशिशरन्तु शिवा शशिव्यग श्रीशुकोवाच इति ललन अनुनयाति विशारदो ग्राम्य वैदग्ध्यया परिभाषयाता विबतभूतं विभूत मतिरते सभाजयामास स च ततस्तस्य वीरयूत पदेर्बुद्धिशील रूप वयस्य यौधार्येण पराक्षिप्त मनास्तेन सखायुधायुत परिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बुद्वीप पदिना भौमस्वर्गभोगान् बुभूजे तस्यामो हैव आत्मजांस राजावर आग्निद्रो नाभि किं पुरुष हरिवर्षे इलावृत रम्यक हिरण्मय गुरु भद्राश्व हेतुमाल सज्ञानव पुत्रान जनयत् शासुद्वाद सुधानवानुवत्सरं गृह एवाबकाय पूर्वचिद्दीर्भूय एवाजं देवम् उपतस्ते आग्नितरशुतास्ते माधुर् अनुग्रहादौत् बद्धिकेनैव संखन नभ नभलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यदा भागं जम्बुद्वीप वर्षाणि बुभुजुः अग्निधरो राजा अदृप्त कामानाम सरसमेवानुते नुतिन मदिमन्यमानः तस्या सलोकता श्रुतिभिरवारुन्द यतर पितरो मादयन्ते संबरेते पितरे नव भ्रातरो मेरुदुहितृः मेरुदेवीं प्रतिरूपाम् उग्रदं श्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीदिम् इति संज्ञा नवोदवहन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे आग्नेयवर्णनां नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।